are lifting it wrong way, that is why it will not come up well. Welcome, dear friends. Can you hear me? For this Guru Poornima celebration, the full moon day that is celebrated as the birthday of the first Guru in the Sanatana Dharma tradition, Vedic tradition, is Vyasa. So Vyasa's birthday is celebrated as Guru Poornima. Poornima means full moon day. Now that actually happened 3 days, that is on Wednesday. But for the convenience of people to attend the program, we are celebrating it on a weekend. And thank you for coming, friends. And let us start the worship. The program will follow like there will be the worship ritual. While it is going on, there will be lot of music that also will happen. Those who are good, singers, they can come forward and keep on singing as and when there is this available. So please, I know we have this Ishwari and Arghya is there to play tabla. Then there is, I see Ratna is there. Then also we have Peter Travisano, we have Mukhtar. So a lot of good singers are there. Somebody else also that I don't know may come and join in singing. So then there will be some reading about Guru, and there will be a short speech and then some concluding remarks. There will be then the prasad that will be offered downstairs as lunch. So you are welcome to join in that. Then after that there will be a concert of devotional music. That will be a well-known singer and other accompanists they are coming, and that program will begin at 2 p.m. Should be about 2 to 3:30, close to 4, like that. So you are welcome to join that as well. So let us begin. Om Sarvamangala-Mangalyam Varenyam Varadam Shubham Narayanam Namaskritya Sarvakarmani Karayet. Om Vishnu, Om Vishnu, Om Vishnu. ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः. ॐ एते गन्धपुष्पे आधारशक्त्यादिभ्यो नमः. नमः.
ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम द्वारदेवताभ्यो नमः। ओम द्वारदेवताभ्यो नमः। ओम द्वारदेवताभ्यो नमः। ओम एते गंधपुष्पे द्वारदेवताभ्यो नमः। ओम एते गंधपुष्पे ब्रह्मणे नमः। ओम एते गंधपुष्पे वास्तुपुरुषाय नमः। फट 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 फट। ओम सर्वविघ्नानुत्सारय ओम फट स्वाहा। ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भुवि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। ओम अस्यासनोपवेशन मंत्रस्य मेरुपृष्ठऋषिसुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसनोपवेशने विनियोगः। सब चलो गुरु के देश, सब चलो गुरु के देश, वहाँ पर प्रेमी वेश में गुरु विराजे। प्रेमी वेश में गुरु विराजे, करुणा की मूरत है वो गुरु प्यारा। वहाँ बरसे अमृत धारा, वहाँ बरसे अमृत धारा। वहाँ काम क्रोध की गंध नहीं और जन्मादिक दुख द्वंद्व नहीं। वहाँ काम क्रोध की गंध नहीं और जन्मादिक दुख द्वंद्व नहीं। कहने तीने श्रुति ने उसे पुकारा, वहाँ बरसे अमृत धारा, वहाँ बरसे अमृत धारा। जो भूले भटके आते हैं वो सीधी राह पे जाते हैं। जो भूले भटके आते हैं वो सीधी राह पे जाते हैं। समदृष्टि से है सब ही एकाकारा, वहाँ बरसे अमृत धारा, वहाँ बरसे अमृत धारा। त्रितापों की जो ज्वाला है सद्गुरु बुझाने वाला है। त्रितापों की
ज्वाला है, सद्गुरु बुझाने वाला है। वहाँ नित्य ही सागर है अपरंपारा, वहाँ बरसे अमृत धारा, वहाँ बरसे अमृत धारा। सद्गुरु जी शांति दाता है, वो ही त्रिलोक के त्राता है। सद्गुरु जी शांति दाता है, वो ही त्रिलोक के त्राता है। वहाँ तो हम शब्द का बजता है नगारा, वहाँ बरसे अमृत धारा, वहाँ बरसे अमृत धारा। सब चलो गुरु के देश, वहाँ पर प्रेमी वेश गुरु विराजे। करुणा की मूरत है वो गुरु प्यारा, वहाँ बरसे अमृत धारा, वहाँ बरसे अमृत धारा, अमृत धारा, अमृत धारा। हंसः ॐ भूतशृङ्गाटाच्छिरजीव शिवं सुषुम्नापथेन परमशिवपदे योजयामि स्वाहा। ॐ यं लिङ्गशरीरं शोषय शोषय स्वाहा। ॐ रं सङ्कोचशरीरं दह दह स्वाहा। ॐ परमशिवं सुषुम्नापथेन मूलशृङ्गाटमुल्लसोल्लस ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल सोऽहं हंसः स्वाहा। प्रणाम। ॐ एतेभ्यो गन्धादिभ्यो नमः। ॐ एतन्मूर्तये। ॐ एते गन्धपुष्पे। भवसागर तारण कारण हे, रविनन्दन बन्धन खण्डन हे। शरणागत किङ्कर भीत मने, शरणागत किङ्कर भीत मने। गुरुदेव दया कर दीन जने, गुरुदेव दया कर दीन जने। गुरुदेव दया कर दीन जने। हृदय कंदर तामस भास्कर हे,
তুমি विष्णु प्रजापति शंकर है पर ब्रह्म परात्पर वेद भने पर ब्रह्म परात्पर वेद भने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने मनोवारण शासन अंकुश है नरत्राण करे हरि चाखुश है गुणगान परायण देवगणे गुणगान परायण देवगणे गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने कुंडलिनी घुम भंज कहे निधि क्रांति विदारण कारक है मम मानस चंचल रात्र दिने मम मानस चंचल रात्र दिने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने रिपुसूदन मंगल नायक है सुख शांति बड़ा भय दायक है त्रयताप हरे तब नाम गुणे त्रयताप हरे तब नाम गुणे गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने अभिमान प्रभाव में मर्द कहे गतिहीन जते तुम्हें रख कहे चित संकित वंचित भक्ति धने चित संकित वंचित भक्ति धने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने तब नाम सदा शुभ साधक है पतिता धम मानव पावक है महिमा तब गोचर शुद्ध मने महिमा तब गोचर शुद्ध मने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने जय सद्गुरु ईश्वर प्रापक है भवरोग विकार विनाशक है मन जैन रहे तब श्री चरणे मन जैन रहे तब श्री चरणे गुरुदेव दया कर दीन जने 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 गुरुदेव दया
ने न जाने। बाणेश्वर शिवाय नमः। ओम इदं सचंदन पुष्पम बाणेश्वर शिवाय नमः। ओम ऐं एष धूपः बाणेश्वर शिवाय नमः। ओम ऐं एष दीपः बाणेश्वर शिवाय नमः। ओम ऐं इदं सोपकरणनैवेद्यं राम कृष्ण चरण सरोजे मजरे मन मधुपम। राम कृष्ण चरण सरोजे मजरे मन मधुपम। कंटाके आवृत विषय केतके कंटाके आवृत विषय केतके थेको ना ताहे विभोर। राम कृष्ण चरण सरोजे मजरे मन मधुपम। जन्म मरण विषम व्याधि निरवधि कत सहिब आय। जन्म मरण विषम व्याधि निरवधि कत सहिब आय। प्रेम पीयूष पियरे श्रीपदे प्रेम पीयूष पियरे श्रीपदे भवेरे जातना रवे ना तो। राम कृष्ण चरण सरोजे मजरे मन मधुपम। राम कृष्ण चरण सरोजे मजरे मन मधुपम। धर्म धर्म सुख दुख शांति जाला द्वंद्व खेला माझे नहीं निस्तार। धर्म धर्म सुख दुख शांति जाला द्वंद्व खेला माझे नहीं निस्तार। ज्ञान कृपणे परम जतने ज्ञान कृपणे परम जतने काटरे काटरे परम डर। राम कृष्ण चरण सरोजे मजरे मन मधुपम। राम कृष्ण चरण सरोजे मजरे मन मधुपम। राम कृष्ण नाम बलरे बदने महिरे जामिनी होई विभोर। राम कृष्ण नाम बलरे बदने महिरे जामिनी होई विभोर। दुःस्वप्न जाला रबे ना दुःस्वप्न जाला रबे ना छुटे जाबे तोर घुमेरे घर। राम कृष्ण चरण सरोजे मजरे मन मधुपम। राम कृष्ण चरण सरोजे मजरे मन मधुपम। कंटाके आवृत
বিষয়কে তোকে কটাকে আবৃত বিষয়কে তোকে থেকো না তাহে বিভোর রাম কৃষ্ণ চরণ সরজে মুজরে মন মধুপমর রাম কৃষ্ণ চরণ সরজে মুজরে মন মধুপমর রাম কৃষ্ণ চরণ সরজে মুজরে মন মধুপমর। जय जय राम कृष्ण बोल बदने एमन मधुर नाम आर पाबिने जय जय राम कृष्ण बोल बदने एमन मधुर नाम आर पाबिने तोरा एमन मधुर नाम आर पाबिने एमन मधुर नाम आर पाबिने तोरा एमन मधुर नाम आर पाबिने एमन मधुर नाम आर पाबिने जय जय राम कृष्ण बोल बदने एमन मधुर नाम आर पाबिने तोरा एमन प्रेमे ठाकुर आर पाबिने एमन दया ठाकुर आर पाबिने तोरा एमन प्रेमे ठाकुर आर पाबिने एमन दया ठाकुर आर पाबिने जय जय राम कृष्ण बोल बदने एमन मधुर नाम आर पाबिने আমার পুকুর ধন্য হলো তোমার জন্মে দক্ষিণেশ্বর পূর্ণ হলো তোমার সাধনে আমার পুকুর ধন্য হলো তোমার জন্মে দক্ষিণেশ্বর পূর্ণ হলো তোমার সাধনে জয় জয় রাম কৃষ্ণ বল বদনে এমন মধুর নাম আর পাবিনে এমন কল্প তরু আর পাবিনে এমন জগৎ গুরু আর পাবিনে তোরা এমন কল্প তরু আর পাবিনে এমন জগৎ গুরু আর পাবিনে জয় জয় রাম কৃষ্ণ বল বদনে এমন মধুর নাম আর পাবিনে গদাধর নামে তুমি এলে ভুবনে পাপি তাপি উদ্ধারিল তোমার নাম গুণে গদাধর নামে তুমি এলে ভুবনে কত পাপি তাপি উদ্ধারিল তোমার নাম গুণে জয় জয় রাম কৃষ্ণ বল বদনে এমন মধুর নাম আর পাবিনে এমন পতিত পাবন আর পাবিনে এমন কাঙালে ধন আর পাবিনে তোরা এমন পতিত পাবন আর পাবিনে এমন কাঙালে ধন আর পাবিনে জয় জয় রাম কৃষ্ণ বল বদনে এমন মধুর নাম আর পাবিনে যত
ততপথ সাধুর জীবনে অবতার বরিষ্ঠায় প্রণাম চরণে যত ততপথ সাধুর জীবনে অবতার বরিষ্ঠায় প্রণাম চরণে জয় জয় রাম কৃষ্ণ বল বদনে এমন মধুর নাম আর পাবিনে জয় জয় রাম কৃষ্ণ বল বদনে এমন মধুর নাম আর পাবিনে তোরা এমন মধুর নাম আর পাবিনে এমন মধুর নাম আর পাবিনে তোরা এমন মধুর নাম আর পাবিনে এমন মধুর নাম আর পাবিনে জয় জয় রাম কৃষ্ণ বল বদনে এমন মধুর নাম আর পাবিনে জয় জয় রাম কৃষ্ণ বল বদনে এমন মধুর নাম আর পাবিনে জয় জয় রাম কৃষ্ণ বল বদনে এমন মধুর নাম আর পাবিনে জয় জয় রাম কৃষ্ণ বল বদনে এমন মধুর নাম আর পাবিনে ओम ऐं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय श्रीरामकृष्णाय नमः। কেন শঙ্খ চক্র গদা পদলুকাও কেন শঙ্খ চক্র গদা পদলুকাও অধমের দিয়ে ফাঁকে কি বলিতে চাও শঙ্খ চক্র গদা পদলুকাও কেন শঙ্খ চক্র গদা পদলুকাও অধমের দিয়ে ফাঁকে কি বলিতে চাও শঙ্খ চক্র গদা পদলুকাও কেন শঙ্খ চক্র গদা পদলুকাও দক্ষিণেশ্বরে তুমি পূজিলে কালী শিব রাম রাধা শ্রী বনমালী দক্ষিণেশ্বরে তুমি পূজিলে কালী শিব রাম রাধা শ্রী বনমালী সীতা মহাবীর যিশু পীর পূজাতা সীতা মহাবীর যিশু পীর পূজাতা কি বলিতে চাও তুমি কি বলিতে চাও শঙ্খ চক্র গদা পদলুকাও কেন শঙ্খ চক্র গদা পদলুকাও এত নীলা প্রকাশে এ ভাবলয়ে এত দুঃখ সয়েতা এত কথা কয়ে এত নীলা প্রকাশে এ ভাবলয়ে এত দুঃখ সয়েতা এত কথা কয়ে লীলা কি মহান তব কি বাগান তাও লীলা কি মহান তব কি বাগান তাও কি ঢাকিতে চাও প্রভু কি বলিতে চাও অতুরের দিয়ে ফাঁকে
কোথা যেতে চাও কেন শঙ্খ চক্র গদা পদ লুকাও বলিতে চাও প্রভু কি বলিতে চাও শঙ্খ চক্র গদা পদ লুকাও কেন শঙ্খ চক্র গদা পদ লুকাও কত জ্ঞানী গুণীজন পদ পুজে তাও কত জ্ঞানী গুণীজন পদ পুজে তাও লুকায়ে আপনারে কিবা সুখ পাও অসহায় দিয়ে ফাঁকে কিবা সুখ পাও শঙ্খ চক্র গদা পদ লুকাও কেন শঙ্খ চক্র গদা পদ লুকাও অধমের দিয়ে ফাঁকে কি বলিতে চাও শঙ্খ চক্র গদা পদ লুকাও কেন শঙ্খ চক্র গদা পদ লুকাও কেন শঙ্খ চক্র গদা পদ লুকাও তলে পড়ে থাক গুরু বলে ডাক নাও মন হরি বলে ডাক গুরু বলে ডাক নাও মন হরি বলে ডাক ও তুই दीवाने से भावे मुझे ओ তুই दीवाने से भावे मुझे গুরুর চরণ তলে পড়ে থাক গুরু বলো ডাক নাও মন হরি বলে ডাক গুরু বলো ডাক নাও মন হরি বলে ডাক ও তুই दीवाने से भावे मुझे ओ তুই दीवाने से भावे मुझे গুরুর চরণ তলে পড়ে থাক গুরু বলো ডাক নাও মন হরি বলে ডাক গুরু বলো ডাক নাও মন হরি বলে ডাক
তুই প্রাণ প্রেয়সে সঙ্গে শুয়া নানা রঙে কথা কয়া মন রে কাল কাটালে রঙ রসে মন রে কাল কাটালে রঙে রসে ও তোর দিওয়ানিশি নাই রে ভাগ গুরু বলো ডাক নাও মন হরে বলে ডাক গুরু বলো ডাক নাও মন হরে বলে ডাক ও তুই দিওয়ানিশি ভাবে মুঝে ও তুই দিওয়ানিশি ভাবে মুঝে গুরুর চরণ তলে পড়ে থাক গুরু বলো ডাক নাও মন হরে বলে ডাক গুরু বলো ডাক নাও মন হরে বলে ডাক গুরু বলো ডাক নাও মন হরে বলে ডাক ও তুই দিওয়ানিশি ভাবে মুঝে ও তুই দিওয়ানিশি ভাবে মুঝে গুরু চরণ তলে পড়ে থাক গুরু বলো ডাক নাও মন হরে বলে ডাক 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 So friends, we did the Sri Ramakrishna worship just finished. Now we will be doing the worship for Guru. So the same pattern in all the worship in Vedanta means you feel the presence of the worship divine in your heart as your true self, the Atman, and then invoke that and bring it out for the sake of worship, and then offer your worship with all devotion with various articles. So we did it just now with Sri Ramakrishna. Now we will do it for the Guru. So there is always the dhyana mantra, the invocation, meditation on that Guru mantra with which the deity is invoked in our mind and then brought out on a flower, and then it is felt that the Guru is on that flower and is worshipped there. ओम ह्रीं एते गंधपुष्पे पीठदेवताभ्यो नमः। ओम ह्रीं एते गंधपुष्पे पीठशक्तिभ्यो नमः। ओम ऐं श्री गुरवे नमः इत्यस्य मंत्रस्य ब्रह्मर्षि गायत्री छन्दः गुरुरूपः श्रीरामकृष्णो देवता। ऋष्यादिन्यासे विनियोगः। ओम ब्रह्मणे ऋषे नमः। ओम गायत्री छन्दसे नमः। ओम ऐं श्री गुरवे नमः। गं अंगुष्ठाभ्यां नमः। गां शीर्षतर्जनीभ्यां स्वाहा। गौं मध्यमाभ्यां वषड्गैं अनामिकाभ्यां हुं गौं कनिष्ठाभ्यां वषड्ग करतलपृष्ठाभ्याम् अस्त्राय फट्। गां हृदयाय नमः। गीं शीर्षे स्वाहा। गौं शिखायै वषड्गैं कवचाय हुं गौं नेत्राभ्यां वषड्ग करतलपृष्ठाभ्याम् अस्त्राय फट्। ओम ऐं श्री गुरवे नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम्
I am the ocean where all have begun. I am beloved sublime. I am the ocean where all finally come. I am the one beyond time. I am the one beyond time. I am the one who made heaven and earth, planets and stars up above. I am the treasure of infinite worth. I am the ocean of love. I am the ocean of love. I am the ocean of limitless joy, infinite consciousness too. I am the music that never will cloy. I am the ocean in you. I am the ocean in you. I am the one who made heaven and earth, planets and stars up above. I am the treasure of infinite worth. I am the ocean of love. I am the ocean of love. I am the ocean of unending peace, infinite hearing and sight. You from your chains I have come to release into my ocean of light, into my ocean of light. For I am the one who made heaven and earth, planets and stars up above. I am the treasure of infinite worth. I am the ocean of love. I am the ocean of love. I am the ocean of unbroken calm, infinite bliss I am too. I've been called Jesus and Buddha and Ram, and now Ramakrishna to you. Now Ramakrishna to you. I am the one who made heaven and earth, planets and stars up above. I am the treasure of infinite worth. I am the ocean of love. I am the ocean of love, drowning in the ocean of love.
सचंदन पुष्पांजलिः पुष्पबिल्वपत्रांजलिः श्री गुरवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मद
গুরু ভজ রে ওরে সোনার চাঁদ, নীল দরিয়ায় উঠলে তুফান, কে দেবে আশান মন গুরু ভজ রে, গুরু ভজ রে ওরে সোনার চাঁদ, নীল দরিয়ায় উঠলে তুফান, কে দেবে আশান মন গুরু ভজ রে। গুরু ভজ গুরু চিন্ত গুরু কর সাধ, গুরু ভজ গুরু চিন্ত গুরু কর সাধ, গুরু বিনে এ ভুবনে, গুরু বিনে এ ভুবনে, গুরু বিনে এ ভুবনে, বন্ধু নাই রে আর মন গুরু ভজ রে, গুরু ভজ রে ওরে সোনার চাঁদ, নীল দরিয়ায় উঠলে তুফান, কে দিবে আশান মন গুরু ভজ রে। ভাই বলো বন্ধু বলো কে তো কারণ, ভাই বলো বন্ধু বলো কে তো কারণ, দু চার দিনের দেখা শোনা, দু চার দিনের দেখা শোনা, দু চার দিনের দেখা শোনা, পথের পরিচয় মন গুরু ভজ রে, গুরু ভজ রে ওরে সোনার চাঁদ, নীল দরিয়ায় উঠলে তুফান, কে দেবে আশান মন গুরু ভজ রে। এই দেহ দরিয়ার মাঝে কতই করো খেলা, এই দেহ দরিয়ার মাঝে কতই করো খেলা, পিছন পানে চেয়ে দেখো, পিছন পানে চেয়ে দেখো, পিছন পানে চেয়ে দেখো, ঘুরায় যায় বেলায় মন গুরু ভজ রে, গুরু ভজ রে ওরে সোনার চাঁদ, নীল দরিয়ায় উঠলে তুফান, কে দিবে আশান মন গুরু ভজ রে, গুরু ভজ রে ওরে সোনার চাঁদ, নীল দরিয়ায় উঠলে তুফান, কে দিবে আশান মন গুরু ভজ রে। So, dear friends, now we will be offering the lunch to the deities, and while they are partaking the lunch, there will be the reading about Guru from Swami Vivekananda's Bhakti Yoga. I request Izzy to do the reading for us. Bhakti Yoga, the need of Guru. Every soul is destined to be perfect, and every being in the end will attain the state of perfection. Whatever we are now is the result of our acts and thoughts in the past.
and whatever we shall be in the future will be the result of what we think and do now. But this, the shaping of our destinies, does not preclude our receiving help from outside. Nay, in the vast majority of cases, such help is absolutely necessary. When it comes, the higher powers and possibilities of the soul are quickened, spiritual life is awakened, growth is animated, and man becomes holy and perfect in the end. This quickening impulse cannot be derived from books. The soul can only receive impulses from another soul and from nothing else. We may study books all our lives, we may become very intellectual, but in the end, we find that we have not developed at all spiritually. It is not true that a high order of intellectual development always goes hand in hand with a proportionate development of the spiritual side in man. In studying books, we are sometimes deluded into thinking that thereby we are being spiritually helped. But if we analyze the effect of the study of books on ourselves, we shall find that at the utmost, it is only our intellect that derives profit from such studies, and not our inner spirit. This inadequacy of books to quicken spiritual growth is the reason why, although almost every one of us can speak most wonderfully on spiritual matters, when it comes to action and the living of a truly spiritual life, we find ourselves so awfully deficient. To quicken the spirit, the impulse must come from another soul. The person from whose soul such impulse comes is called the guru, the teacher, and the person to whose soul the impulse is conveyed is called the shishya, the student. To convey such an impulse to any soul, in the first place, the soul from which it proceeds must possess the power of transmitting it, as it were, to another. And in the second place, the soul to which it is transmitted must be fit to receive it. The seed must be a living seed, and the field must be ready plowed. And when both these conditions are fulfilled, a wonderful growth of genuine religion takes place. The true preacher of religion has to be of wonderful capabilities, and clever shall his hearer be. And when both of these are really wonderful and extraordinary, then will a splendid spiritual awakening result, and not otherwise. Such alone are the real teachers, and such alone are also the real students, the real aspirants. All others are only playing with spirituality. They have just a little curiosity awakened, just a little intellectual aspiration kindled in them, but are merely standing on the outward fringe of the horizon of religion. There is no doubt some value even in that, as it may in course of time result in the awakening of a real thirst for religion. And it is a mysterious law of nature that as soon as the field is ready, the seed must and does come. As soon as the soul earnestly desires to have religion, the transmitter of the religious force must and does appear to help that soul. When the power that attracts the light of religion in the receiving soul is full and strong, the power which answers to that attraction and sends in light does come as a matter of course. There are, however, certain great dangers in the way. There is, for instance, the danger to the receiving soul of its mistaking momentary emotions for real religious yearning. We may study that in ourselves. Many a time in our lives, somebody dies whom we loved. We receive a blow. We feel that the world is slipping between our fingers.
that we want something surer and higher, and that we must become religious. In a few days, that wave of feeling has passed away, and we are left stranded just where we were before. We are, all of us, often mistaking such impulses for real thirst after religion. But as long as these momentary emotions are thus mistaken, that continuous, real craving of the soul for religion will not come, and we shall not find the true transmitter of spirituality into our nature. So whenever we are tempted to complain of our search after the truth that we desire so much, proving vain, instead of so complaining, our first duty ought to be to look into our own souls and find whether the craving in the heart is real. Then in the vast majority of cases, it will be discovered that we were not fit for receiving the truth. There was no real thirst for spirituality. There are still greater dangers in regard to the transmitter, the guru. There are many who, though immersed in ignorance, yet in the pride of their hearts, fancy they know everything, and not only do not stop there, but offer to take others on their shoulders, and thus the blind, leading the blind, both fall into the ditch. Fools dwelling in darkness, wise in their own conceit, and puffed up with vain knowledge, go round and round, staggering to and fro, like blind men led by the blind. From the Katha Upanishad. The world is full of these. Everyone wants to be a teacher. Every beggar wants to make a gift of $1 million. Just as these beggars are ridiculous, so are these teachers. Qualifications of the aspirant and the teacher. How are we to know a teacher then? The sun requires no torch to make him visible. We need not light a candle in order to see him. When the sun rises, we instinctively become aware of the fact, and when a teacher of men comes to help us, the soul will instinctively know that truth has already begun to shine upon it. Truth stands on its own evidence. It does not require any other testimony to prove it true. It is self-effulgent. It penetrates into the innermost corners of our nature, and in its presence, the whole universe stands up and says, "This is truth." The teacher whose wisdom and truth shine like the light of the sun are the very greatest the world has known, and they are worshipped as God by the major portion of mankind. But we may get help from comparatively lesser ones also. Only we ourselves do not possess intuition enough to judge properly of the man from whom we receive teaching and guidance. So there ought to be certain tests, certain conditions for the teacher to satisfy, as there are also for the taught. The conditions necessary for the taught are purity, a real thirst after knowledge, and perseverance. No impure soul can really be religious. Purity in thought, speech, and act is absolutely necessary for anyone to be religious. As to the thirst after knowledge, it is an old law that we all get whatever we want. None of us can get anything other than what we fix our hearts upon. To pant for religion truly is a very difficult thing, not at all so easy as we generally imagine. Hearing religious talk or reading religious books is no proof yet of a real want felt in the heart. There must be a continuous struggle, a constant fight, an unremitting grappling with our lower nature till the higher want is actually felt and the victory is achieved. It is not a question of 1 or 2 days, of years, or of lives. The struggle may have to go on for hundreds of lifetimes. The success sometimes may come immediately,
but we must be ready to wait patiently even for what may look like an infinite length of time. The student who sets out with such a spirit of perseverance will surely find success and realization at last. In regard to the teacher, we must see that he knows the spirit of the scriptures. The whole world reads Bibles, Vedas, and Qurans, but they are all only words, syntax, etymology, philology, the dry bones of religion. The teacher who deals too much in words and allows the mind to be carried away by the force of words loses the spirit. It is the knowledge of the spirit of the scriptures alone that constitutes the true religious teacher. The network of the words of the scripture is like a huge forest in which the human mind often loses itself and finds no way out. The network of words is a big forest. It is the cause of a curious wandering of the mind. The various methods of joining words, the various methods of speaking in beautiful language, the various methods of explaining the diction of the scriptures are only for the disputations and enjoyment of the learned. They do not conduce to the development of spiritual perception. Those who employ such methods to impart religion to others are only desirous to show off their learning so that the world may praise them as great scholars. You will find that no one of the great teachers of the world ever went into these various explanations of the text. There is with them no attempt at text torturing, no eternal playing upon the meaning of words and their roots, yet they nobly taught. While others who have nothing to teach have taken up a word sometimes and written a 3-volume book on its origin, on the man who used it first, and what that man was accustomed to eat, and how long he slept, and so on. Bhagavan Ramakrishna used to tell a story of some men who went into a mango orchard and busied themselves in counting the leaves, the twigs, and the branches, examining their color, comparing their size, and noting down everything most carefully, and then got up a learned discussion on each of these topics, which were undoubtedly highly interesting to them. But one of them, more sensible than the others, did not care for all these things, and instead thereof began to eat the mango fruit. And was he not wise? So leave this counting of leaves and twigs and note-taking to others. This kind of work has its proper place, but not here in the spiritual domain. You never see a strong spiritual man among these leaf counters. Religion, the highest aim, the highest glory of man, does not require so much labor. If you want to be a bhakta, it is not at all necessary for you to know whether Krishna was born in Mathura or in Vraja, what he was doing, or just the exact date on which he pronounced the teaching of the Gita. You only require to feel the craving for the beautiful lessons of duty and love in the Gita. All the other particulars about it and its author are for the enjoyment of the learner. Let them have what they desire. Say Shanti Shanti to their learned controversies, and let us eat the mangoes. So before we actually eat mangoes, there will be arati and some other things. So where is our arati leader? Okay, yeah.
नमो नमो प्रभु भगवानादित नमो नमो प्रभु भगवानादित मन वचनैकाधार प्रभु मन वचनैकाधार ज्योतिर्ज्योतिर्जल हृदिकन्दर ज्योतिर्ज्योतिर्जल हृदिकन्दर तुमि तम भञ्जनहार प्रभु तुमि तम भञ्जनहार थे 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 लंग रंग भंग आजे अंग शुभ मृदंग थे थे लंग रंग भंग आजे अंग शुभ मृदंग गाइছে ছন্দ ভগত বৃন্দ আরতি তোমার গাইছে ছন্দ ভগত বৃন্দ আরতি তোমার জয় জয় আরতি তোমার হর হর আরতি তোমার শিব শিব আরতি তোমার খণ্ডান ভাব বন্ধন জগবন্ধন বন্দে তোমার जय श्री गुरु महाराज जी की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते शरणागतं दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते
जय श्री राम कृष्ण देव की जय। जय श्री शारदा देवी की जय। जय श्री स्वामी विवेकानंद की जय। जय श्री बुद्धदेव की जय। जय श्री जीसस क्राइस्ट की जय। So we are just finishing the worship ritual. Now before you offer your personal flower worship, there will be a talk about, by Juhi Wagre about the Guru principle. So I request her to come here and deliver her speech. That now should be taken down, and also to give flowers and water. Huh? Yeah. Good morning. Pranam Swamiji. So, okay, good day. So, don't worry, I'll be brief here. So, Swamiji asked me to speak a few words on Guru Poornima. So, I feel that the best place to begin is with something that Swamiji always says. On many occasions, Swamiji has mentioned that Sri Ramakrishna is the only true Guru. And Swamiji gives an analogy of a tank on the top of a building which supplies water to all faucets in the building. What matters is the water. The faucet is inconsequential. So Thakur is the water, get connected to him. Whom you get connected through is not important. Swami Sardanandji has written on this point as well. In Sri Ramakrishna and his divine play, Volume 3, Chapter 3, Sardanandji differentiates between the Guru Shakti and the human Guru. He says, quote, "The exalted power by which the Divine Mother removes ignorance and delusion from human minds is called Guru Bhava or Guru Shakti, the nature or power of the Guru. The scriptures declare this divine power to be the Guru and advise human beings to have faith in it and to offer wholehearted reverence and devotion to it. But a worldly minded person who has just started to learn to practice devotion and respect cannot comprehend or love an incorporeal power. So the scriptures advise paying respect to the human Guru who gives initiation in spiritual life." End quote. And skipping a few paragraphs, he goes on to say, quote, "Actually, we have never seen the power and a person endowed with that power existing separately. It is like fire. Fire and its power to burn cannot be separated. Therefore, one cannot accept one and pay love and respect to it, but reject the other. As long as body consciousness remains, one has no alternative
other than to worship the human Guru, through whose body the divine power is bestowing grace. End quote. So, going back to the water and faucet analogy, it does make a difference which faucet we get the water from, because it is easy to love some people. With the smallest interaction, we are mysteriously drawn to some people and know them to be our own. And Guru Bhakti is tremendously important in spiritual life. I heard an unforgettable story from Pravrajika Vrajaprana Mataji when I was visiting Santa Barbara. When she had decided to join the order and become a nun, she visited Swami Asheshanandaji to seek his blessings and advice. She sought a personal interview with him and asked him, "Swamiji, I have decided to devote my life to seeking God. What advice do you have for me? What is the most important spiritual practice I should follow?" Swamiji was a disciple of Holy Mother and he always communicated with her. Especially if someone asked him advice, he would never say anything unless it came directly from her. So when Mataji asked him for advice, he went silent and started meditating. Mataji was very nervous. She was waiting for something big, like obedience, discipline, renunciation, discrimination, or some such word. After about 10 minutes, Swamiji opened his eyes and said, very gravely, "Love Holy Mother." Mataji's first mental reaction was, "That's it?" But out loud, she only asked, "Anything else?" Swamiji went silent again. In a few moments, he replied, "Practice Guru Bhakti." So we can take this as having come directly from Holy Mother through Swami Asheshanandaji, that loving God and Guru Bhakti are the two most important spiritual practices. The Shvetashvatar Upanishad is considered a Bhakti Upanishad. In its last verse, it says that the subject matters that have been spoken of so far become revealed to that one who had supreme devotion to the deity and as much devotion to the Guru as to the deity. The Upanishad puts equal emphasis on devotion to God and devotion to the Guru. Sant Kabir, on the other hand, says that the Guru is more precious. In one of his dohas, he says, "If both Guru and God were to appear in front of me, whose feet will I worship first? It has to be the Guru's feet, through whom I came to recognize God." I remember one morning when we were having tea, Swamiji told me, "It is good to cut all your ties with people, cut all your relationship bonds, but don't cut this bond," pointing to himself like this. "Don't cut this Guru-disciple bond through which you will get liberation." So with Thakur Ma Swamiji's grace and Swamiji with your blessings and grace, I will hold on to this precious bond. Thank you. Jai Ma. A drop of water to symbolically purify your hands, and a flower that you will offer as your personal worship. And then after that, please proceed to the basement to partake prasad. Please, where are our volunteers to give water? Please take one more so that it will be quicker. Give water in another bowl also so that it will, yeah. So those who have got flower, please come and go first. Yes.
want to sing, they can still continue singing. Juhi, you want to sing now? Juhi, singing. There was Rashmi, where is she? She can sing. Oh, Juhi wants to sing, okay. You will stand and sing? Okay. Or sit, okay. गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अनेकजन्मसम्प्राप्ते कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथो श्रीजगन्नाथो मद्गुरुः श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि
गुरुशरणं गुरुशरणं सदा मम श्री गुरुशरणं 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 सदा मम श्री गुरुशरणं गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म सदा मम श्री गुरुशरणं 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 सदा मम श्री गुरुशरणं सदा मम श्री गुरुशरणं सदा मम श्री गुरुशरणम् मोहे लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की चरण बिना मुझे कछु नहीं भावे कछु नहीं भावे चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे कछु नहीं भावे झूठी माया सपनन की झूठी माया सपनन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की भव सागर सब सूख गया है सूख गया है भव सागर सब सूख गया है सूख गया है फिक्र नहीं मोहे तरनन की फिक्र नहीं मुझे तरनन की मोहि लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर गिरधर नागर मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर गिरधर नागर उलट भई मोरे नयनन की उलट भई मोरे नयनन की मोहि लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नाम न जाने धाम ना
जाने जाने न सेवा पूजा जाने बस इतना अजान हम एक बिना नहीं दूजा नहीं दूजा तुम आशा विश्वास हमारे तुम धरती आकाश हमारे तुम धरती आकाश हमारे रामा तुम आशा विश्वास हमारे तात मात तुम बंधु भ्रात हो दिवस रात्रि संध्या प्रभात हो तात मात तुम बंधु भ्रात हो दिवस रात्रि संध्या प्रभात हो दीपक सूर्य चंद्र तारक में रामा तुम ही ज्योति प्रकाश हमारी रामा तुम आशा विश्वास हमारे तुम धरती आकाश हमारे तुम आशा विश्वास हमारे জয় গুরু শ্রী গুরু বলে ডাকরে ভোলা মন জয় গুরু শ্রী গুরু বলে ডাকরে ভোলা মন দয়াল গুরু বিনে ত্রিভুবনে দয়াল গুরু বিনে ত্রিভুবনে নাই রে আপন জন ভোলা মন নাই রে আপন জন জয় গুরু শ্রী গুরু বলে ডাক রে ভোলা মন জয় গুরু শ্রী গুরু বলে ডাক রে ভোলা মন দয়াল গুরু বিনে ত্রিভুবনে দয়াল গুরু বিনে ত্রিভুবনে নাই রে আপন জন ভোলা মন নাই রে আপন জন জয় গুরু শ্রী গুরু বলে ডাক রে ভোলা মন বহু পুণ্যে লোভিয়াছ মনুষ্য জনম কামিনী কাঞ্চন ভুলে ধর শ্রী গুরু চরণ আনন্দের রিধি বৃন্দাবনে রাখো তারে সযতনে আনন্দের রিধি বৃন্দাবনে রাখো তারে সযতনে ও মন পাবি শক্তি ভক্তি মুক্তি ও মন পাবি শক্তি ভক্তি মুক্তি লইলে শরণ ভোলা মন লইলে শরণ জয় গুরু শ্রী গুরু বলে ডাক রে ভোলা মন জয় গুরু শ্রী গুরু বলে ডাক রে ভোলা মন
রামকৃষ্ণ নামের জোয়ার এলো, রামকৃষ্ণ নামের জোয়ার এলো, ভাসিয়ে দে না তোরি ভাব ভক্তি উথলে ওঠে আহা মোরি মোরি। রাম কৃষ্ণ নামের জোয়ার এলো, ভাসিয়ে দে না তোরি ভাব ভক্তি উথলে ওঠে আহা মোরি মোরি। কাম কাঞ্চন ডুবে গেল অথই জলেতে, কাম কাঞ্চন ডুবে গেল অথই জলেতে, হৃদয় পদ্ম উঠল ফুটে, হৃদয় পদ্ম উঠল ফুটে ভক্তি প্রেমেতে, ভাব ভক্তি উথলে ওঠে আহা মোরি মোরি। তুমি ভয় পেও না মাঝ দরিয়ায় যদি ঝড় ওঠে, তুমি ভয় পেও না মাঝ দরিয়ায় যদি ঝড় ওঠে, যদি ইন্দ্রিয় আর রিপু দল, ইন্দ্রিয় আর রিপু দল বিষয় পানে ছোটে, ভাব ভক্তি উথলে ওঠে আহা মোরি মোরি। নামের হালটি ধরে শক্ত করে বেজাও তরি, নামের হালটি ধরে শক্ত করে বেজাও তরি, শেষে ভবের পাহাড়ে নিয়ে যাবে, ভবের পাহাড়ে নিয়ে যাবে রামকৃষ্ণ নামটারি, ভাব ভক্তি উথলে ওঠে আহা মোরি মোরি। ভাব ভক্তি উথলে ওঠে আহা মোরি মোরি। Please, Yoga.